friends, welcome to Indra coaching classes. In this video we will discuss one very important question. The question is discuss the constitutional or administrative changes that took place in India after the revolt of 1857. ये प्रश्न है क्लास 9 सेवा हिस्ट्री का और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आपने इंदिरा कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सोशल साइंस, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश टेक्स्ट बुक related question, then you can write those questions in the you see comment box. I will try to satisfy you. The question is number 1. Today we are to discuss, the question is discuss the administrative or constitutional changes that took place in India after the revolt of 1857. This is the question today. Then आप जानते हैं कि जब 1857 revolt was crushed by the British, after this they you see passed one act. It was called Government of India Act 1858, or it was also called Queen's Proclamation. Through Queen's Proclamation, administrative changes took place in India. Then administrative change number 1 or constitutional change number 1 is that the administration of India was transferred from the British East India Company to the British Parliament. अभी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म हो गया, विच स्टार्टेड इन 1757. वो 1757 में जो स्टार्ट हुआ था वो शासन ख़त्म हो गया एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री. दूसरा, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया वाज रूलिंग इंडिया विद द हेल्प ऑफ 2 bodies, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. These 2 bodies lost their power. In place of that, the post of Secretary of State was created, and he was to and on that post a cabinet minister of the British Parliament was appointed. He was to run the administration of the country with the aid and advice of 15-member council. In the India Council was formed that time. Then this is what happened. Next is the Viceroy. The Governor General ruled India during the East India Company's rule. This Governor General's title was changed to Viceroy. He became Viceroy. Viceroy means he became the representative of the Queen, of the Crown of England. If it is Queen, if it is King or Crown, he became the representative of the Crown. What is the meaning of Viceroy? Viceroy means the representative of the Crown of England. तो वायसराय रूल करने लगा. एंड अभी इसके बाद में क्या हुआ? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज सेट असाइड. The doctrine of lapse that was implemented, and several Indian states were annexed to the British Empire. That act was abolished, repealed, and Indian rulers were assured that their their kingdom would not be annexed to the British Empire further after the revolt of 1857. This was the assurance given to the Indian rulers. भारतीय राजाओं को ये एश्योरेंस दिया गया कि आपका राज्य नहीं मिलाया जाता. They were free to give their kingdom to their successor. If they did not have natural son or daughter, natural successor, they would adopt also. ये दे दिया गया उनको. And one more thing is that the Indian rulers had to accept the supremacy of the British Crown. माने वो ब्रिटिश के सबऑर्डिनेट रहेंगे, ये मानना पड़ा भारत के राजाओं को. नेक्स्ट क्या हुआ कि उनको they assured the Indian rulers and Indian society that they would not interfere in the internal religious, cultural and traditional activities, customs of the country. पहले उन्होंने सती दाह को रोका था, पहले उन्होंने चाइल्ड
यू सी फीमेल चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को रोका था और इस तरह से बहुत सारे सुधार किए थे, दैट वाज पॉजिटिव। लेकिन उन्होंने अब कह दिया कि आप अपना धर्म कर्म अपने बनाइए, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये एश्योरेंस उन्होंने दिया। उन्होंने मिलिट्री में एक चेंज किया। उस समय द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी वाज 8:1, 8 और 1 थे, यानी 8 हिंदुस्तानी और 1 अंग्रेज थे। लेकिन 1857 ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 द सोल्जर्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द British East India Company. Therefore, they decided that the number of Indian soldiers would be reduced, and this was done. Next is in the revolt of 1857, people participated and they were put in jail. Some were hanged to death. लेकिन उसमें the British government you see granted general amnesty to all. सबको माफ़ कर दिया, एक्सेप्ट दोज हु वे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वायोलेंट एक्टिविटीज़। जो लोग हिंसक वारदातों में इन्वॉल्व थे उनको छोड़कर सबों को माफ़ कर दिया गया। इस तरह से कुछ चेंजेज हुए और इसके बाद में हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें होगा सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ 1857 के रिवोल्ट के बाद हमारे सोसाइटी पर क्या असर पड़ा। तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, यू सी watch till the end and like this video, subscribe my channel Indra Coaching Classes, press the bell icon and share with your friends. If you have any questions, write in it. Thank you. Have a nice time. Thank you.